बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5। और इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले सकते हैं। आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है जी कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स के डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। Text encoding schemes are essential for representing character from various languages and symbol in format that computer can understand and process. Here are some of most common text encoding schemes used in computers. देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर सिर्फ किस लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की फॉर्म को। और हमारा जो डाटा होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, वो वीडियो होता है, वो ऑडियो होता है, डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्कीम्स होते हैं। हमारे पास क्या है जी, ASCII code. ASCII is an acronym that stands for American Standard Code for Information Interchange. It is a character encoding standard adopted for representing text in devices such as computer and similar systems. Each alphabet number or symbol is given a code number between 0 and 127. यानी कि हर अल्फाबेट, हर करेक्टर अल्फाबेट या कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में डाटा है, कोई सैंपल है, किसी उसको 0 से लेकर 127 के दरमियान कोई ना कोई इसको नंबर या कोड दे दिया जाता है और इस तमाम को एक टेबल में दिखाया गया है। तो हमारे पास ASCII enables different computer and devices to exchange text information reliability. Let's encode the name of our country using ASCII. The ASCII code for an uppercase letter P is 80, यानी कि पाकिस्तान का P कैपिटल है तो उसको किससे हम ज़ाहिर करेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो 80। The code for letter A in ASCII code is 97, यानी स्मॉल a का जो कोड है वो 97 है। और ASCII कोड फॉर कैपिटल लेटर K का जो है वो 107 है। It's interesting is known as that ASCII code for the letter I is 105. In ASCII code system, the letter S has a code for 115. इसी तरह the code for T is 116 is ASCII. The ASCII code is a numerical representation of character in a computer-based system, particularly for alphabet character. For example, the ASCII code for character N is 100. तो ये हमारे पास इसका टेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास 32 स्पेस को ज़ाहिर करता है, 34 जो है वो कोटेशन को ज़ाहिर करता है, 36 यानी कि सारे कोड दिए हुए हैं और उनके आगे सिंबल और उनके कोड वैल्यू P80 को ज़ाहिर करता है। और ये सारे इसी तरह हमारे पास कोड गिवन है और उनकी वैल्यूज दी हुई है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। एक्सटेंडेड ASCII क्या होता है, उसमें क्या था, 0 से 128 तक था। While the standard ASCII table in 128 character, there is an extended version that including 256 character. अब उसमें क्या है, 128 character include है, इसमें क्या है 256 character. This extended ASCII use 8-bit and includes additional symbol, accents, letters or other character. However, the original 128 character are the most commonly used and serve as the basis for the text representation. अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट है यूनिकोड। यूनिकोड is an attempt at mapping all graphic character used in any of the word writing system. Unlike ASCII, which is limited to 7-bit, can represent only 128 character, Unicode can represent over a million characters through different form of encoding such as UTF-8, UTF-16, UTF-32. UTF is an acronym that stands for Unicode Transformation Format. Next है UTF-8 क्या होता है जी? It is a variable length encoding scheme, meaning it can use to different number bytes यानी कि 1 to 4 to represent a character
UTF-8 is backward compatible with ASCII, यानी उसी का ही एडवांस एक वर्जन है, meaning it can understand and use to older ASCII encoding scheme without any problem. Therefore, if we have to text file written in ASCII, it will work perfectly fine with UTF-8, allowing it to read both old and new text. Example as a letter A is Unicode represent as U plus 0041 is 01000001 in binary format and occupy 8-bit area 1 byte. Let's look at Urdu letter are represented in UTF-8. The Urdu letter B is represented in Unicode as U plus 0628. Its binary format is 11011000. 10100100, meaning it take 2 bytes. तो हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो UTF-16 क्या होता है जी। UTF-16 is another variable character encoding mechanism, although it use either 2 bytes or 4 bytes per character at a most. Unlike UTF-8, it is not compatible with ASCII, meaning it cannot translate ASCII codes. Example, the letter in UTF-16 is equal to 00000 100001 in binary और 65 इन डेसिमल यानी कि 2 बाइट्स। अगर हम इसी की एग्जांपल की बात करें बे की, उर्दू लेटर पे है इन UTF-16 इज रिप्रेजेंट एज 0000110001000 इन binary which occupy 2 bytes of memory, यानी कि ये कितनी मेमोरी लेगा 2। नेक्स्ट लास्ट है इसका UTF-32. UTF-32 is a method of encoding that uses a fixed length with all characters stored in 4 bytes per character. This makes it very simple, but at the same time it may look a little complicated when it comes to space usage. तो ये था हमारा आज का यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर हम इसी के एग्जांपल की बात करें, द लेटर इज इन UTF-32 रिप्रेजेंटेड इन binary as, यानी कि ये 4 बाइट लेगा 00000, यानी कि वो पहले 3 जीरो ही आ जाएंगे, आगे वो फिर 10100001 विच इज 4 बाइट्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।